Now, in the approach of vomiting, case studies we are looking. Now, we will move to the second case, that is case number 2. Carefully look into this case, okay? 2-month-old child is presented with the mild fever and vomiting. Yes, there is fever also. 2-month-old baby is almost infant of 2 months. There is a mild fever and as well as vomiting. Okay. Now, within next 6 hours, he vomited 3 to 4 times and he becomes drowsy. Carefully follow the case. 2 महीने का बच्चा है, माइल्ड फीवर और उसको वोमिटिंग आ गया, और वोमिटिंग आते उसके बाद 6 घंटे के बाद वो 3 से 4 बार वोमिटिंग किया उसने, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा डल हो गया और ड्राउजी हो गया एंड द चाइल्ड इज डिप्रेस्ड नाउ एंड नॉट रेस्पॉन्डिंग फॉर पेनफुल स्टिमुलाई. बच्चा कंप्लीटली डिप्रेस हो चुका है, डल है, एंड ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई ऑल्सो. Okay, so later child was hospitalized. So definitely this is a red flag sign, isn't it? Associated symptoms, everything is there. So later child is hospitalized and kept on antibiotics and some IV fluids and kept nil by mouth. Okay, तो orally उसको बंद कर दिया, जो भी IV से चलना शुरू हो गया. Now after some time sensorium is also decreased. Sensorium उसको decrease हो चुका है already. Baby is not responding to painful stimuli. Further it decreased now. All the routine investigations are done like CBC, CRP, CSF, fluid analysis, है ना, तो सब कुछ किया. बिकॉज फीवर है तो इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, इट मे बी मेनिंजाइटिस और CNS इन्फेक्शंस, एंड यूरिन इज डन, यूरिन का भी किया, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल. फॉर योर सरप्राइज एवरीथिंग इज नॉर्मल. CBC नॉर्मल है, CRP नॉर्मल है, CSF एनालिसिस नॉर्मल है, बट माइल्ड फीवर इज देयर. एंड चेस्ट एक्सरे इज ऑल्सो नॉर्मल. चेस्ट एक्सरे इज ऑल्सो नॉर्मल. And the child was on nil by mouth and put on IV fluids. And now, surprisingly, child will become normal after 24 hours. 24 hours के बाद nil by mouth आपने रखा, IV fluid में रखा बच्चे को. Within 24 hours, the child slowly become active. And in the next day, child was discharged. Child was absolutely normal and child was discharged because investigation is also normal. But he again come back with the same type of complaint after 2 days. बच्चा वापस जो है 2 दिन के बाद सेम उसको माइल्ड फीवर जैसा लग रहा है, वोमिटिंग लग रहा है और डल हो गया बच्चा. विद द सेम कंप्लेंट अगेन ही कम बैक. ओके, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी सीन एट टाइम्स. ओके, सो व्हाट इज दिस केस? AG, acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis, do you think it is going to be relieved within 24 hours? No. Biliary atresia, sir. Biliary atresia means vomiting should contain Bile. should not contain any bile and all. And every investigation is normal, X-ray is normal. Okay, so let us look into this case. Now, in this case, the child has the fever which is mild, है ना, कि मेन कंप्लेंट पेशेंट का क्या था कि वोमिटिंग था और माइल्ड फीवर था. माइल्ड फीवर मीन्स इट इज नॉट एक्यूट फीवर, वी नो दैट. Now, and there will be vomiting and which increases in the next 6 hours. Vomiting is progressively increasing in the next 6 hours, and then naturally child become drowsy. So in this case, although fever is mild, the other symptoms are very fast and happened almost suddenly. वोमिटिंग जो है बहुत सडनली हो रहा है. 6-7 बार वोमिटिंग होना छोटी बात नहीं है, ठीक है. वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको. माइल्ड फीवर है, कन्फ्यूजन किसी को भी हो जाएगा, दिस इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है. Now, so vomiting is not causing the vomiting almost sudden. Okay, so vomiting is not causing the drowsiness. Rather, there is some disease which is causing vomiting and drowsiness both. Now, this has to be understood. If the fever is causing the drowsiness, then why there is drowsiness only after vomiting? ठीक है, तो फीवर के साथ साथ उसको ड्राउजीनेस शुरू होना था, बस ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे फीवर इज देयर, माइल्ड फीवर इज देयर, चाइल्ड वाज एक्टिव, व्हेन ही स्टार्टेड वोमिटिंग दैट टू 6 to 7 times वोमिटिंग हो गया, उसके बाद बच्चा ड्राउजी हो गया. ओके, सो एवरीबडी विल हैव ए फीलिंग दैट दिस इज बिकॉज ऑफ वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, बच्चा ड्राउजी हो गया. बट एक्चुअली
it is not actually omitting which is causing the drowsiness. There is some other cause which is causing omitting and drowsiness both. I think you are able to understand. एक ऐसी कॉज है जिसकी वजह से ओमिटिंग और ड्राउजीनेस हो रहा है, वो एक ही कॉज की वजह से ओमिटिंग भी हो रहा है और ड्राउजीनेस भी हो रहा है. ठीक है, एज वी थिंक इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओमिटिंग द ड्राउजीनेस स्टार्टेड. No, we will see that. So common causes of sudden onset. Whenever here the symptoms are sudden, isn't it? So in this case, the symptoms are very sudden. Suddenly vomiting started and child is now drowsy for us. But if you look in carefully, vomiting and drowsiness both are started by a single cause. That we will discuss. If you see any sudden onset, कुछ भी होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो inflammation होना चाहिए, okay? या तो vascular cause होना चाहिए, just like in the case of paralysis. Suddenly there is rupture of vessels and blood is coming out, hematoma या जो भी है, and presentation of paralysis, sudden onset है. Okay, so vascular events or thrombosis, embolism, sudden events. Then toxins, they always cause sudden events. Then metabolic, they also cause the sudden events. Then some allergies, immune-mediated allergies, or trauma, mechanical, sometimes neurological. So they are some of the common causes when suddenly things are occurring. Now we have to see inflammation. Yes, fever is there, maybe inflammation. ओके, वी कैन नॉट एक्सक्लूड. देन वैस्कुलर, ऐसा तो नहीं लगता है कोई वैस्कुलर इवेंट है यहाँ पे. टॉक्सिन हिस्ट्री नहीं है, एलर्जी का हिस्ट्री नहीं है, ट्रॉमा का हिस्ट्री नहीं है. सो लेट अस सी व्हाट मे बी द कॉज. नाउ इन this may be because of infection and inflammatory like meningitis etc. But there is no meningitis, no symptoms, हमने exclude कर दिया. Onset of the fever is sudden in case of meningitis, but बहुत हाई ग्रेड फीवर मिलता है meningitis में, बट इट्स ए माइल्ड फीवर. इम्यून मीडिएटेड तो है ही नहीं है. ठीक है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी आप मानेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन सम अदर क्लास, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर वेरी लेस कॉमन इन अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ. दे आर मोर कॉमन इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ. ठीक है, 1 ईयर के बच्चे में जो है बहुत अनकॉमन है कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. देन न्यूरोलॉजिक, देयर इज नो एनी फोकल सिम्टम्स, सीजर्स, इरिटेबिलिटी, कुछ भी नहीं है बच्चे में. वैस्कुलर है क्या? नहीं. जो वन इज वैस्कुलर कॉसेस सडन इफेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वैस्कुलर कॉसेस लोकलाइज्ड इफेक्ट्स. सो ऐसा कुछ नहीं है. हिस्ट्री ऑफ पॉइजन नहीं है, टॉक्सिन नहीं है, ट्रॉमा नहीं है. नाउ लुक इनटू द केस, व्हाट मे बी द कॉज. हैव यू ऑब्जर्व्ड अनदर पार्ट इन द हिस्ट्री? व्हाट इज दैट? बच्चे को आपने एंटीबायोटिक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, सही नहीं हुआ था, और आईवी फ्लूइड में हमने रखा एंड यू कीप द बेबी ऑन नील बाई माउथ. ठीक है, दिस इज ओनली ट्रीटमेंट वी हैव गिवन. एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल दिखा रहा है. एनीवे, बट व्हेन यू आर गिविंग आईवी फ्लूइड्स and keeping the baby nil by mouth for 24 hours, the patient get recovered. इसके अलावा और कुछ नहीं किया है ना, अपने आप वो सही हो गया, and discharged also. But after 2 days again he come back to the same complaint. Now do you think it is inflammation? No. Do you think it is because of fever? No. There is sudden appearance, sudden disappearance and sudden reappearance. ओके, कोई भी सिम्टम सडनली आ रहा है, सडनली जा रहा है और सडनली वापस आ रहा है. पॉसिबल इन 2 कंडीशंस. वन इज एलर्जी, अनदर वन इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. ओके, एलर्जी मीन्स यू विल गेट द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी. इन मेटाबॉलिक वी कैनॉट गेट द प्रॉपर हिस्ट्री. ओके, so therefore either it is allergic condition or metabolic condition, but it is not allergic because there is no history available of any kind, and therefore it is definitely a metabolic problem. Okay, how you can say that? This gives a suspicion of the metabolic disorders. Sudden appearance of the symptoms, sudden disappearance by keeping the baby nil by mouth for 24 hours, again recurrence of the symptoms after rescheduling the feed. Feed को आपने वापस देना शुरू कर दिया, जो भी खाना उसको सिम्टम्स वापस आ गए. इसका मतलब है जो खाना आप दे रहे हैं उसमें कोई कंटेंट है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म उसका ठीक से नहीं हो रहा है. मेटाबॉलिक टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहा है, intermediary metabolic toxic materials produce हो रहा है, and that toxic material is now causing the problem. That toxic material is also causing the problem, leading to vomiting, and that toxic substance is also affecting the brain, leading to drowsiness. Therefore there is one cause which is causing both vomiting and as well as drowsiness at a time. Okay, so
the thing is now very clear. This is a metabolic problem. Metabolic problem which is happening in so early part of the life, second month of the life. Most commonly it is inborn errors of metabolism. Inborn errors of metabolism. So now this case is a known case. This is a case of inborn errors of metabolism. Again, the diagnosis is made without using much of the investigations. Very simple observation and history taking. Okay, now sudden appearance, sudden disappearance and reappearance. Now this is what exactly Charaka says in case of Grahani Roga. Muhurbaddam Muhurdravam. ठीक है, जो सिम्टम्स है वो सडनली आ रहा है और दैट मीन्स स्टूल का पैटर्न है सडनली चेंज हो रहा है और सडनली सही हो रहा है और वापस जो है मुहरबद्द मुहर इन बिटवीन नॉर्मल हो रहा है और वापस ऐसे ही हो रहा है और वापस बद्धा हो रहा है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स whole grahani has to be studied in this context. That's a different issue. But if you look into the grahani, this is a typical grahani. That's a problem in the metabolism. Okay, so this is a case of inborn errors of metabolism. Now you have to look into which inborn errors of metabolism. हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, फैट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है. उसमें कौन सा है? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ something which is given in the feed is not metabolized. This is just a repetition. Something which is given in the feed is not get metabolized, and there is formation of the intermetabolic toxic waste product and causing the CNS depression. Okay, न्यूरॉन को भी डिप्रेस कर रहा है, इसकी वजह से ड्राउजीनेस आ गया उसको, और वो टॉक्सिक मटेरियल है स्टोमक में स्टोर हो गया या कहीं पे भी स्टोर हो गया, या वो जो टॉक्सिक मटेरियल है जाके आपको वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, इसकी वजह से उसको वोमिटिंग भी हो गया. ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो वोमिटिंग है इसका वो स्टोमक से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, वोमिटिंग जो है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो ब्रेन के अंदर भी जा रहा है, न्यूरॉन को भी डिप्रेस कर रहा है, इसलिए वो ड्राउजीनेस आ गया, और वो जो है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी जा रहा है, वोमिटिंग सेंटर को भी स्टिमुलेट कर रहा है और इरिटेट कर रहा है, इसलिए वोमिटिंग शुरू हो गया. ओके, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ नॉसिया वगैरह नहीं है, बिकॉज दिस इज अ CNS ओरिजिन. सो राइटली, सो क्या हुआ कि कॉसिंग द CNS डिप्रेशन एंड वोमिटिंग. नो व्हेन यू कीप द बेबी नील बाय माउथ फॉर 2 days, आपने कुछ भी खाना नहीं दिया, क्या हुआ? जो मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, सो वो सब क्लियर हो गया बॉडी से. वो क्लियर होते ही जो है बच्चा सही हो गया. ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग नाउ, एनी टॉक्सिक मटेरियल इज नॉट देयर, इट इज क्लियर्ड ऑफ, एंड अगेन द बेबी बिकम नॉर्मल, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग थ्रू द माउथ. है ना, आपने जो रूटीन खाना जो देते हैं वो दिया नहीं, आपने उसको IV में रखा. सो एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, सो बच्चा सही हो गया, मदर खुश हो गई, घर चली गई और रूटीन जो है अपना खाने में आ गई वापस. जैसा रूटीन का खाना देना शुरू हो गया तो बच्चे को वापस शुरू हो गया, क्योंकि वो जो खाना है उसमें कोई चीज़ है उसको बच्चे का बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है. एंड अगेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड द साइकिल रीस्टार्टेड. Okay, cycles again started. So this is called as this is called as the metabolic problem. Okay, so rightly अभी क्या करना है कि metabolic problem है तो you have to importantly we have to look into serum urea and ammonia. ठीक है, ammonia और serum urea ये दोनों देखना है. Then you can pick up the typical inborn errors of metabolism. फीवर क्यों आ रहा है? यस, फीवर इज बिकॉज यहाँ पे एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है. सी द टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स विच इज देयर, सो दैट इज क्या है कि इट इज ऑल्सो इरिटेटिंग द थर्मल सेंटर. ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है वहाँ पे बॉडी का हीट भी बढ़ जाएगा, इट्स क्वाइट ऑफन. ओके, सो बिकॉज ऑफ सेम इट जो टॉक्सिक मटेरियल्स है इट इज ऑल्सो सेटिंग द हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है उसको भी वो चेंज करेगा. ओके, सो देयरफॉर आल्सो इट लीड्स टू फीवर. दैट फीवर इज नॉट अ हाई ग्रेड फीवर, और ऐसा नहीं है कि माइल्ड फीवर है, माइल्ड फीवर है. ओके, एंड इफ यू लुक इनटू ग्रहणी, आई थिंक दैट इज गठी यंत्र ग्रहणी, ऐसा कुछ जो साइक्लिकली आने वाला कुछ ग्रहणी है, आप पढ़े होंगे. ठीक है, कैन एनीबडी सेज दैट नेम? 2 टाइप का जो ग्रहणी है. घटी यंत्र ग्रहणी है सर, संग्रहणी एक होती है. एक संग्रहणी है, यस, संग्रहणी है, घटी यंत्र ग्रहणी, ये दोनों में आप इसको ले सकते हैं. ठीक है, घटी यंत्र में भी ऐसे है कि वो कुछ एपिसोड्स में आता है, कुछ दिन के बाद वापस हो जाता है ना, पूरा कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होने के बाद उसको हो जाता है.
संग्रहणी में भी ऐसे होता है. सो these are the two types of the grannies which can be taken as this type of inborn errors of metabolism to some extent. Okay. सर इसका यूरिन तो नॉर्मल आया था, अभी जो रिपोर्ट कराई उसका यूरिन में नॉर्मल आया, अब लेकिन यहाँ अमोनिया आ रहा है सीरम में, तो किडनी तो वर्किंग सही कर ही रही है. सी एक्चुअली जो शुरू में जब आया था ना, सो शुरू में इन्वेस्टिगेशन जब किया तो मैक्सिमम बच्चे ने वोमिटिंग आउट कर दिया है. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन व्हेन यू स्टार्टेड द वोमिटिंग इज ओवर, ऑलमोस्ट ऑल जो भी ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंस है वो सब बाहर आ ही चुका है. ठीक है, एंड देयर इज नथिंग. ठीक है, अब शुरू में लिया तो शायद इट वुड हैव बीन पॉसिबल, बट व्हाट दे आर टेलिंग इज कि आपको जो है अर्ली पिकअप करने के लिए, एक बार आपको लगा कि दिस इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, देन यू टू कन्फर्म दैट यू हैव टू गो फॉर सीरम यूरिया एंड अमोनिया. Definitely you find increased levels of urea and ammonia. Okay. Now actually this was a case of galactosemia. चलो कोई बात नहीं. Now we come to the third case. सर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में फिर इसमें कुछ रहेगा क्या, हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करा सके? सेम सीरम, एक बार आपको पता चल गया ना कि ये कोई ना कोई टाइप का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू गो फॉर सीरम यूरिया एंड क्या अमोनिया एक्सेट्रा हैज टू बी सेम, वो कंफर्म करने के लिए. ओके, नाउ वी गो टू द लास्ट अनदर केस.